So, hi, good evening, everybody. This is Bishwajit Datta, Director, Success Ahead Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. This is a very, you know, a different, I would say, a topic which is absolutely, different than that of what we usually do most of the time. We are basically known for one particular examination called as CLAT, and along with that, we do have lot many other things wherein we support students to prepare. Today, the topic that I feel like going to discuss with you is that lot many times we come across with other students, the outgoing students, the students who are already studying in various national law universities or in various other institutions. Sometimes they come out with their ideas that इस एग्ज़ाम को कैटर करने के लिए क्लियर करने के लिए हमको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है. There are so many people ऐसा करते हैं and at the same time you will find there are ample of people who select. इसमें कोई but people are very less. Means you can always be able to count them. A very handful of students you can count. As simple as that. मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई व्यक्ति बिना किसी कोचिंग क्लास के बिना किसी मेंटरशिप के कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, बट मैं डेफिनेटली ये बात रखूँगा why somebody who prepares, why somebody who takes the coaching or somebody who have a mentor behind would make everything get into happening faster. There are certain reasons for that. If I go to the back of my mind, I can collect so many ways through which I can prove that if you prepare under somebody, gets a cumulative support from all the spheres, it becomes faster for you to grow. I mean, it is not only a matter of discipline that you bring in your life, but at the same time, चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती है वो एक डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रीमलाइंड मैनर में चलती जाती है. एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्या करता है? व्हाट इज द पर्पस टू हैव ए कोचिंग क्लास इज टू हैव एन एनवायरनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि वो एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपका पेस स्लो हो जाए, धीमा हो जाए. देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस वेयर पीपल गो टेक देयर लेसन्स एंड दे कम बैक टू होम. देयर आर सम प्लेसेस वेयर पीपल गो टेक देयर क्लासेस एंड दे स्टे देयर फॉर सम टाइम. Sometimes people stay for 4 hours, people stay for 6 hours, and sometimes I've seen the outstation students staying in the center for almost the day. अब ये जो आप दिन भर आप एक एनवायरनमेंट में आप होते हो, इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन योर माइंड. आपके दिमाग में वो एक एनवायरनमेंट अपने आप बन जाता है और वो बार-बार आपको ट्रिगर करता है. आपके दिमाग से आपके एम्बिशन, आपके ड्रीम को हटने नहीं देता है. इट इज ऑलवेज देयर इन साइट. आप एक सवाल लगाते हो, आप प्रश्न करते हो, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, आप लेसन्स लेते हो, आप थ्योरी क्लास अटेंड करते हो. एवरी टाइम इट spins around your mind that you have to clear these exams. A coaching class actually develops that. In fact, I can tell you at my place, we try to keep the environment such that student can recite throughout the day. They can prepare not just the examination, but their mind too. To enter into some environment, you need to have your mind to be prepared very fast. If it doesn't do, then you won't be able to perform better in the actual real life examinations. आज आप कह सकते हो कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो नहीं ले सकते हो. यू हैव हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ. अब आप ये नहीं सोचते हो कि मैं एक बार खुद से सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर कर लेता हूँ. इफ आई डू नॉट क्लियर द एग्जाम, देन आई विल टेक ए ड्रॉप एंड आई विल चूज ए मेंटर और ए कोचिंग सेंटर एंड देन आई विल गो फॉर इट. You don't have time for that. We have very limited time and you have to do it within that time. That's it. So there is no point sitting at home, getting informations from friends, try to collect lot of materials from the coaching center and then you get puzzled to figure out कि मैं करूँ कौन सा, ये वाला करूँ कि वो वाला करूँ कि ये वाला पढ़ूँ कि वो वाला पढ़ूँ, ऐसे पढ़ूँ कि वैसे पढ़ूँ. When you have ample of things, you won't be able to choose the very important element which is required for the exam. So when you work under a mentorship, somebody who knows the inside out of the game can help you out in many ways. सबसे पहले तो उसका ये काम हो जाता है कि
आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, और उस डायरेक्शन में जब आप मूव इन करते हो तो उस डायरेक्शन में चलते हुए जो भी आपकी गड़बड़ियां हो उसको ढूंढे, उनको समझे और उनको रेक्टिफाई करे. सो व्हेन यू आर moving towards a particular path, it is undoubtedly very natural that you are bound to attempt a lot of mistakes. Committing mistake is not a problem, but committing unnecessary mistake is how you are getting deviated from the actual destination. तो वो जो unnecessary unwanted mistakes वो आपकी नहीं होती. For example, let's say you have to tackle a particular topic on in English, and you do not know the right approach. So maybe you'll try to collect the information from various places and try to add on and try to create a value in that preparation. That could be quite done. आप कर सकते हो. But to do so, you need an ample of time to manage a lot of things. But at the same time, when you go to a particular place where you know that I have a very specific, specialized expert who can make me prepare for this particular topic, particular concept can be done, can be groomed just in one day. And next day, I'll be an equal expert with that of the person who himself or herself is an expert. Expert makes an expert. To get an expert on your own will definitely take a lot of time, but to become an expert, it is just a matter of 6 months time. So if you are nurtured well under somebody, within 6 months of time, you will be doing fantastic. चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो. When you are learning under somebody, an umbrella can give you the complete support. So what all the things that you do in a year span of time, you can do it in 4 months of time. Because right now in this particular exam, you need an ample of practice. पर ample of practice का मतलब ये नहीं कि आप एक 100 क्वेश्चन पेपर सवाल आप करते चले जाओ. एक होमवर्क करके आप देख लो, आप 50 से 60 मॉक टेस्ट पेपर लगा करके देख लो. यू विल फाइंड दैट योर स्कोर विल कॉन्स्टेंटली विद इन दैट लिमिट जहां पर आप हो. यदि आपके 50 आ रहे हैं तो आप 50 और 55 के बीच में रहोगे. यदि आपके 60 आ रहे हैं तो आप 60 और 65 के बीच में रहोगे. You won't finding that doing lot of mocks still not improving your scores. So what is the reason behind that? Obviously, the weak foundation is actually not helping you to move further. अब या तो आपके फाउंडेशन को दोबारा बनाया जाए, which is again going to cost a lot, will take lot of time in that. या जो गलतियां आप कर रहे हो पेपर में, उन गलतियों को हम छांट लें. We're able to figure out what all mistakes the students are doing, and we can plan out a strategy to kill those mistakes. Let those mistakes won't happen, and thereby you are able to improve, thereby you are able to move further. हम एक मॉक टेस्ट पेपर लिखते हैं, उसको लिखने के बाद तुरंत दूसरा टेस्ट पेपर लिखते हैं. जैसे हो गया तीसरा लिखते हैं, इधर का उठा लिया, फिर किसी और का उठा लिया, फिर कहीं और का उठा लिया, और सबको करने में लग जाते हैं. यदि आप फंडामेंटल प्रिपरेशन देखो क्लैट का, तो you will see absolutely, you will find that everything is in a basket of preparations. यदि आप उस बास्केट को खोलोगे तो उसमें बहुत कम पोर्शन मिलेगा. It does not include too much of acquired knowledge to solve those question papers, those questions coming into various sections. But you do require certain amount of inbuilt preparation to make those questions to be solved within that time limit. I won't say it is a matter of strategy. Of course, दुनिया में हर काम में एक स्ट्रेटेजी लगती है, बट स्ट्रेटेजी से पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की आवश्यकता होती है. फिर चाहे इंग्लिश की क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स की क्यों ना हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग की क्यों ना हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग की क्यों ना हो, यू ऑलवेज रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ फाउंडेशन. बिना किसी फाउंडेशन के आप आगे बढ़ नहीं सकते. तो वो बच्चे जिनका फाउंडेशन बना नहीं है, क्योंकि स्कूल में आपके 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आपका फाउंडेशन ही बनता है बेसिकली, जिस पर आप आगे जाके अपना बिल्डिंग तैयार करते हो. और यदि वो फाउंडेशन आपका बना नहीं है तो आगे बिल्डिंग तैयार होने में आपको टाइम लगता है. सो ऑल सच पीपल जिनका वो फाउंडेशन तैयार नहीं हुआ, उस फाउंडेशन को तैयार करने के लिए इनफैक्ट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट वी टेक ऑलमोस्ट 6 months टू डू सो. और जब वो बनता उसके बाद पीपल कैन नर्चर देयर मॉक टेस्ट पेपर गेटिंग टू ए लेवल which can lead to any national law university undoubtedly.
But people from the very first day, without bothering about their foundation, they start doing mock test paper. उससे कभी इंप्रूव नहीं होता, बियॉन्ड द लिमिट आप नहीं कर सकते हो. तो यू नीड टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस साइट्स, और यदि वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, जल्दी से पहुंचाई जाए, इट बिकम्स वेरी इजी. सो वी नॉट ओनली मेक बुक्स, मटीरियल, चूज क्वेश्चन पेपर, सेलेक्ट टॉपिक्स एंड प्रिपेयर ऑल द स्टफ फॉर द स्टूडेंट्स. अब कोई स्टूडेंट ही कहता है कि भाई आप अलग अलग सेंटर के मटेरियल इकट्ठा कर लो, उसको पढ़ लो और उसको पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाओगे. कई बच्चे हो जाते हैं, कई बच्चे नहीं होते. तो ये एक बड़ा पर्सनल डिसीजन होता है हर स्टूडेंट के लिए कि ये डिसाइड करना है कि सर आई वुड लाइक टू एक्ट अंडर ए मेंटर, लेट मी एक्ट अंडर ए मेंटर फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 months and then I would like to see the change that I am getting. If you are not getting any change, in that case either you are not doing anything or the mentor is not putting efforts to make you grow. There could be one of the reasons because of which you are going to get failed. There could not be any third reason. यदि किसी व्यक्ति को लगता है सिंगल हैंडेडली मेरे को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों के लिए कोचिंग सेंटर होता है. यू टॉक अबाउट एनी इंस्टीट्यूशन, यू टॉक अबाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, wherein you will see that the topper all India ranker has never gone to any place. वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर इसलिए बना क्योंकि वो किसी कोचिंग सेंटर नहीं गया. I can quote this 100% with lot of honesty that all those people who are coming first ranker in this examination or for that matter in any other entrance examinations, let it be IIT, JEE or NEET or UPSC or CLAT or anything else, you would always find that those people being very good into their subjects, having a very fantastic required knowledge, still they pursue a coaching center just to have all those informations to be recollected very fast and they could be able to make them properly used in their preparations. आप सारी इंफॉर्मेशन को एक साल के बाद जानोगे तो क्या फायदा होगा. तो बेटर है कि आपका यदि एंट्रेंस एग्जाम किसी पर्टिकुलर मंथ में है तो उसके 4 महीने पहले तक आपका सारा काम हो जाना चाहिए, सो दैट इन दोस 4 months which are supposed to come for the next few months, उस समय के अंदर आप उन सारी प्रिपरेशंस को अपने चेकिंग में, अपने इवैल्यूएशंस में आप देख सको. एग्जाम की तैयारी 3 पार्ट में होता है. फाउंडेशन पार्ट, सबसे पहले हम फाउंडेशन की तैयारी करते हैं. जब हमारा फाउंडेशन तैयार हो जाता है उसके बाद हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट में हम बहुत सारा मॉक एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद तीसरा होता है इंट्रोस्पेक्शन. जो हमसे गलतियां हुई है या हमारी प्रिपरेशन में गलती हुई है या हमने फाउंडेशन में कोई पार्ट छोड़ा है, उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और फिर उसको दोबारा से हमारे प्रिपरेशन में ऐड ऑन करते हैं. उसके बाद आप एक कंप्लीट पैकेज प्रिपरेशन को लेकर पेपर देने के लिए उतरते हो. तीनों में से यदि एक पार्ट भी आपका छूटा है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा. पहला पार्ट छूटा तो बिल्कुल डिवास्टेटिंग होगा, सेकेंड पार्ट छूटा तो भी डिवास्टेटिंग होगा, थर्ड पार्ट होगा छूटा तो आप एक कोई बहुत बड़ा रैंक नहीं ले पाओगे. यू वोंट बी एबल टू टेक द बेस्ट ऑफ द रैंक्स इन द एग्जाम्स. तो ये तीनों पार्ट, पहला फाउंडेशन, सेकेंड द इवैल्यूएशन एंड थर्ड द इंट्रोस्पेक्शन, कि मैंने क्या पढ़ा, उससे मेरे को क्या रिजल्ट मिले, व्हाट माय एक्शन वाज एंड अकॉर्डिंगली व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर नाउ कमिंग. आर द कॉन्सिक्वेंसेज आर सच दैट आई एम एबल टू रिजर्व द बेस्ट ऑफ द कॉलेज फॉर माई सेल्फ. इफ नॉट देन इट जस्ट मीन दैट यू आर येट टू प्रिपेयर समथिंग विच इज स्टिल हैव नॉट डन. तो आपको वो पार्ट करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट. और किसी को मेंटर बनाने में या किसी कोचिंग सेंटर को जाने में कोई हामी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट पे टू मच ऑफ मनी, because the risk of not getting into the best of the colleges is very high, and to lower it down it is always good to go for somebody who can help you out. This is a very simple calculation, there is nothing wrong in that. There are lot many people who do lot of propaganda against the coaching institution, saying that coaching institution doesn't do anything in the preparation of the student. Believe me, people used to work from morning till night to bring out the best study material for the students. ऐसे थोड़ी बन जाता है. आप जो पेपर, किताबें, मॉक टेस्ट पेपर जो पढ़ते हो उसको किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना, बिना उसके तो आपके पास आया नहीं होगा. तो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर बिहाइंड द विंडो एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग द क्वालिटी मटेरियल फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड, एंड दैट कैन नॉट बी डन. सो इट इज बोथ द वे ट्रू फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम बिहाइंड, राइट. The quality of the students who are writing these days the competitive examination has grown higher because of the fact that they are nurtured under a very good condition.
under a very good environment, under a very good mentorship. If I terminate that, believe me, the level of the people participating in the examination will definitely come down substantially. और ये होता है. To protect that, you have to protect your preparation. To protect your preparation, you always need somebody to be standing from behind and helping you to push further and give the best of the results. तो इसमें डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है. There is no point talking about that. The only thing that we need to understand that the risk is very high if I do not get a selection, because you are not going to prepare for a multiple number of times. Because to put you into an environment for 365 days, next 365 days, is something which somebody cannot do for more than one time. एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ना इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमको यह भी सोचना पड़ता है कि कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है. It is not the only entrance examination that you are going to write in your life. Believe me, you are supposed to write a multiple entrance examinations in the time to come. हो सकता है आप आगे चल के यूपीएससी लिखो, जजेस के एग्जाम्स लिखो, आप कुछ और एग्जाम्स लिखो, बट उन सब के लिए आपको टाइम चाहिए. तो बेटर है दैट वी शुड सेव सम टाइम, एंड टू सेव सम टाइम, जिसको अक्वायर करने में आपको 1 साल लगता है, उसको आप 4 महीने में अक्वायर कर लो, अगले 3 महीने में उसको इंप्लीमेंट करो, 1 महीने में उसको इंट्रोस्पेक्ट करो एंड गिव योर बेस्ट शॉट and go out of this phase. As simple as that, right? So do not bother and do not follow those propagandas that talks absolutely irrational about coaching centers, that the coaching center does not impart any of the quality preparations to the students. It's absolutely ruthless. I see these days people in YouTube talking something which is very irrelevant. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पर्सन टू पर्सन में डिपेंड करता. हाँ, 2% बच्चों के लिए हो सकता है कि दैट दे आर substantially very good from the very beginning because of the backing they have been getting from the home, from the culture, from the schools, are such that they are able to stand in this competitive environment. But there are certain schools, there are certain places, people are already behind the line. So for them, it is very important to be a part of an environment first of all, and try to integrate their preparation to a level that from there they are able to compete with the rest of the world. तो कुछ पॉइंट्स ऐसे मेरे मन में आए थे तो मैंने ऐसे लिख दिए, शायद आपके काम में आ जाए. आपके डायरेक्शन राइट होने के बाद भी एक इंस्टीट्यूशन आपको एक डायरेक्शन में जल्दी पुश करने में सपोर्ट करता है, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए आपको स्टूडेंट्स चाहिए, मेंटोर चाहिए, ये एक पैकेज के फॉर्म में चाहिए होता है, एंड यू गेट इट इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन ओनली, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट इट. आप घर पे बैठ करके रात भर पढ़ने से आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट तो बन नहीं सकता. सो इफ यू वांट दैट, यू हैव टू कम टू दिस प्लेस. डेफिनेटली a mentor, sometimes when you are doing low in your exams, is supposed to motivate you all the time. Motivation is something that can bring 360-degree change in a student, and that is very very common. मोटिवेशन के बगैर दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता. कोई भी व्यक्ति काम करने में मोटिवेशन चाहिए, पढ़ने में मोटिवेशन चाहिए, हर चीज में मोटिवेशन चाहिए. यू गेट एन एम्पल अमाउंट ऑफ मोटिवेशन. और मोटिवेशन सिर्फ एक फैकल्टी और मेंटोर नहीं करता है. आप अपने फ्रेंड से मोटिवेट होते हो, अपने पेयर ग्रुप से मोटिवेट होते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मोटिवेट होते हो. यू लुक समबडी हाउ ही राइट्स, विद दैट यू गेट्स मोटिवेटेड. समटाइम्स somebody is reading a particular passage, doing a particular question, applying a particular method, working on a particular theme. You make a miracle out of it when you understand that how things happen. You learn from your friends, from the environment, from other people, and this way you actually add something to your preparation. इतनी सारी चीजें आप कहाँ से अकेले बैठकर लाओगे? Please try to understand. Make a selective approach for the exam. I said ना, एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कई पैसेजेस बनते हैं. Alright, and you need to select something that is very core element, fundamental element for the examinations. Sometimes we study a lot of unwanted things which does not create any value, but sometimes we study a little amount of very selective material that helps lot of value in the preparation. तो कई बार selective preparation करने के लिए भी आपको एक जगह चाहिए होता है. See, if somebody is giving you 40-50 books for an example,
and you're reading all those books are not giving anything out of it, does not make any sense in life, isn't it? But you read only 4 to 5 books, and based on that you are able to solve ample of questions. You get everything what is required. You can scale up. Then I think that selective preparation is much better. Of course, the last line, you learn faster. जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आपको पढ़ने में टाइम लगता है, जब आप किसी से पढ़ते हो आपको कम टाइम लगता है, फिर जब आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हो, यू गेट ए मास्टरी ऑन दैट, एंड देन यू बिकम what you are supposed to. So things start getting faster when you are always in a team, when somebody is supporting you all the way, when you work in an environment, when somebody is there to push you. जब आपको डांटने के लिए भी लोग पीछे खड़े हैं, जब आपको बताने के लिए भी लोग पीछे खड़े हैं, जब आपको मोटिवेट करने के लिए भी लोग पीछे खड़े हैं, जब ऐसा एनवायरनमेंट बन सकता है किसी जगह पर, तो व्हाई नॉट टेक एन एडवांटेज ऑफ इट. हाँ, ये होगा कि थोड़ा सा आपको कॉस्ट उठाना पड़ेगा, but it is better to cost that if I know that the output or the consequences are such that I am definitely going to enjoy over a period of time. तो मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए. तो this particular video is absolutely for all those people जो शायद एक कश्मकश में थे, जो शायद एक कॉन्ट्री में थे या हैं, जिनको लगता है कि क्या करें, कोचिंग सेंटर में जाए या नहीं जाए. और कोचिंग सेंटर में जाने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू इंक्वायर ऑल द कोचिंग सेंटर्स इन द सिटी, सिट विद देम एंड टू फिगर इट आउट, डू दे हैव द टाइम, डू दे हैव दैट टाइम विच दे कैन डिवोट यू टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स. आर यू नॉट वन ऑफ दोज थाउजेंड्स who are just sitting in the class in order to bring an output only for the center but not getting any output for himself or herself? If you feel the center or the people or the mentor do have their time actually for the students and they can give ample of that to you, you should go for that particular center, for that particular mentor only. Right? Try to take wise decision under such an environment and take the best decision for this. 2 से 4% बच्चे, 3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी की आवश्यकता ही नहीं है. दे कैन डू इट ऑन देयर ओन. ओके, थोड़ा सा सपोर्ट मिलने पर वो फास्ट हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज होता है. वंस द प्रिपरेशन इज कंप्लीट, द लेवल ऑफ द टीचर एंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट टू फार, दे आर क्लोज. एब्सोल्युटली, समटाइम्स स्टूडेंट्स आर हेड ऑफ द टीचर्स. And if you are able to equalize that at this particular point of time, then what could you do in the time to come? You can calculate that. और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस तो आता ही है, और कॉन्फिडेंस से आप दुनिया जीत सकते हो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो प्लीज डू नॉट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दोज अनवांटेड सजेशंस. आप अपने बारे में सोचिए. आपको लगता है कि मेरे को कोई सपोर्ट चाहिए और किसी की मदद लेने में कोई नुकसान नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, because nobody is going to teach you something which is unreasonable, unwarranted. Everything that you're going to collect for yourself would be actually investing into your examination. If you find that somebody is adding his experience, his expertise, his all preparations, his ups and downs, his plus and minus to make you a better competitor for the exam, and I think there is nothing to lose in that case. You will definitely be under any demerit in that case. So enjoy a coaching center and proud to be part of a coaching center. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.